Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. So the next thing is Unacademy's awesome special classes. Yes, we are having the live real-time interactions using chats and emojis. Yes, Unacademy के जो हमारे स्पेशल क्लासेस है वहाँ पर आप लोग लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं by using chats and emojis. Yes, obviously you are going to have poll leaderboards and you can compete with your friends also. वहाँ पर कुछ polls हो गए leaderboards. So उसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी and yes you will have the fun with learning. And the next feature of these special classes is you can ask questions using the question tab. You can see the screenshots here. The question, you can type your questions related to the subject and directly send to the teacher also. So ये हमारे Unacademy के some of the special classes के features है. That is, you are going to have live real time interaction using the chat and emojis. Then you can have the live quiz through pros. So pro leaderboards में आप लोग क्या कर सकते हैं? You can have the competition with your friends also, and you can ask the questions using the question tab also. Then next, how to watch these special classes also. देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. जो स्टूडेंट्स है वो लर्नर ऐप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन गो टू दी गूगल प्ले स्टोर, और आपका अगर एप्पल का है तो यू कैन हैव दी एप्पल स्टोर ऑल्सो. सो वहाँ पर आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप के लिए सर्च कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. देन इंस्टॉल इट, डाउनलोड कर. वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ओपन दी ऐप एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. ठीक है, आपका ऐप ओपन हो जाएगा. Then next step is you have to enter your mobile number and OTP. आपका जो करंट मोबाइल नंबर है आपको यूज करना है. then you will get one OTP and based on that OTP you are going to sign up using the email ID. So next step is you have to enter your full name, then your mobile number will be already registered. Then enter your email address and state of the register. So this is the step to watch the special classes. That's the last step is sign up using the email ID. First one, download the Unacademy Learner app, then open the app and click on get started. Then enter your number, that is mobile number and OTP, and lastly sign up using the email ID. Then next step is that is select the classes from class 6 to class 12. It is what goal you are preparing for. The you can select for the competitive exams, as well as if you are going for the class CBC classes 6 to class 12, you can go for that also. ठीक है, CBC क्लास 6 to 12 आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद आपके डिफरेंट क्लासेस आएंगे, क्लास 6 to class 12 एंड आल्सो द क्रिएटिव कॉर्नर. देन आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन क्लास. देन नेक्स्ट, विच लैंग्वेज यू वुड प्रिफर टू लर्न, कौन सी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाई करें. सो यहाँ पर सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज. सो यू कैन यूज इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी एंड इंग्लिश, both mixed. Then next what you are going to do, go to the description of this video, the video which I am playing now, and click on the special class link. यहाँ पर special class की जो link है वहाँ पर आप लोग चाहिए. Then click on notify me and you will get denotified 10 minutes before the class begins. And you can use the code to unlock the special classes for free. So friends, welcome to today's lecture. So today we are going to see class 10's information technology, that is code 402 under NSQ. So what will we study today?
So today's topic is Introduction to Databases, and we are going to study some of the theoretical points regarding the databases. What are the databases? How to use this, and we are going to see some of the practical sessions related to it also. So first of all, we will see the contents of today's lecture. That is introduction to the databases. Then we are going to see database functioning. Then we are going to see how database works actually. The next point which we are going to see is advantages of databases. उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं what are the tables, then queries, then forms and the reports. So let us first start with its first contents, that is the introduction about the databases. So देखिए इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले देखते हैं द व्हाट आर द डेटाबेसेस. एक डेटाबेस जो होता है वो क्या होता है? अ डेटाबेस रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड अ डेटाबेस सिस्टम इज बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. देखिए डेटाबेस में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एक रिलेटेड डेटा एंड अ डेटाबेस सिस्टम होती है बेसिकली, जो कि कंप्यूटर पे बेस्ड एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होती है. जैसे कि आप लोग कुछ रिकॉर्डिंग करते हो, वैसे ही से डेटाबेस जो होता है एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होती है जो आपके कंप्यूटर में होती है, एंड यू आर गोइंग टू स्टोर योर डेटा एंड its related information in that database. So a database contains information about one particular enterprise. So it maintains any information that may be necessary to decision making processes which are involved in the management of that organization. जनरली कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस वगैरह होते हैं तो वहाँ पर ये डेटाबेस सिस्टम्स जो है ये यूज की जाती है. सो जनरली जहाँ पर डिसीजन मेकिंग लगती है, जैसे कि बहुत ही पुराना डेटा आपको एनालिसिस के लिए वगैरह लगता है, रेफरेंसेस के लिए लगता है, तो वहाँ पर डेटाबेस जो है वो यूज होते हैं. सो द इंटेंशन ऑफ द डेटाबेस इज दैट द सेम कलेक्शन ऑफ डेटा शुड सर्व एज मेनी एप्लीकेशंस एज पॉसिबल. सो इसका इंटेंशन क्या होगा देखिए डेटाबेस का, the same collection of data should be served as many as time possible and applications are there of that particular database. जैसे कि आपको कुछ पिछले साल का रिकॉर्ड लेना है, सो वो आपको आपके 2-3 साल के लिए लगने वाला है. सो as many as times we can repeatedly use our databases. So hence a database is often conceived as the repository of the information, and that information is needed for running certain functions in a corporation or organization. So organization का अगर आप लोग कोई भी repository ले तो that repository is nothing but the database of that particular organization. So such a database would permit not only the retrieval of the data but also the continuous modification of data needed for control of operations. So now we are going to discuss about that is a database and its functioning. So यहाँ पर हम लोग जनरली MS Access जो database है विंडोज के लिए अवेलेबल, सो उसके बारे में ज़्यादातर हम लोग बात करेंगे, एंड वी विल गो टू सी एक्चुअल प्रैक्टिकल्स रिगार्डिंग दैट आल्सो. So let us see the next point, that is database functioning. How a database is going to function. So देखिए generally in a typical file processing system where what happens, there are some permanent records as stored in the various files. So a number of different applications programs are written to extract the particular records from and add that files and records to the appropriate files. But this scheme has a number of major limitations and disadvantages, such as suppose that is data redundancy, that is duplication of data will be there, then data inconsistency, then some of the amount of unshareable data,
देन अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा, उसके बाद इनसिक्योर डेटा, इनकरेक्ट डेटा एंड सो ऑन, ऐसे के उसके ड्रॉबैक्स रहेंगे. सो ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is an answer to all these problems and it provides a centralized control of data. So एक centralized control जो है वो database management system आपको देती है. So what we can say, a database refers to the collection of integrated data and database management system is a computer program that manages a database effectively and efficiently. देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है. वो क्या करता है, आपका जो डेटाबेस है वो इफेक्टिव एंड इफिशिएंटली मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है. एंड हियर डेटाबेस रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ इंटररेटेड डेटा. एक इंटररेटेड डेटा होता है, सो उसके कलेक्शन को हम लोग कहते हैं डेटाबेस. सो फॉर इंस्टेंस कंसिडर कीजिए, इन अ रेसिडेंशियल स्कूल इफ देयर आर टू फाइल्स बीइंग मेंटेन्ड, वन फॉर द स्कूल एंड अनदर फॉर द हॉस्टल. सो अभी प्रॉब्लम देखिए इसमें कैसे हो सकती है. वो इट माइट क्रिएट द प्रॉब्लम्स लाइक एज फॉर द स्टूडेंट्स हु लिव इन हॉस्टल, जो हॉस्टल में रहते हैं, देयर रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन टू सेपरेट फाइल्स. दैट इज स्कूल फाइल एक रहेगी उनके लिए एंड हॉस्टल फाइल विल बी देयर. सो नाउ कंसिडर अ सिचुएशन in which the hostel informs the school authorities as well as the hostel authorities about the change of his or her correspondence address. भी इसमें से एक स्टूडेंट का क्या हो गया है, उसका करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो चेंज हो गया है. सो व्हाट विल हैपन इफ द स्कूल अथॉरिटीज फॉरगेट टू चेंज द स्टूडेंट्स एड्रेस बट द हॉस्टल फाइल इज मॉडिफाइड विद चेंज्ड एड्रेस. अभी ऐसी सिचुएशन में कंसिडर कीजिए व्हाट हैपन्स अगर स्टूडेंट का मॉडिफाइड एड्रेस जो है वो हॉस्टल में चला गया है बट इट इज नॉट गॉन टू द डेटाबेस ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज. सो अभी यहाँ पर देखिए, नाउ विच एड्रेस विल बी करेक्ट consider, that is hostel's files address or the school's file address as the accurate one. So यहाँ पर आप लोग there are two addresses, right, which will going to pertaining for the same students. So such a situation is called as the data inconsistency. So ऐसी जो situation होती है कि डेटा यहाँ पर एक है और वहाँ पर एक है, that is nothing but data inconsistency. Now and this raises a problem because the same data is stored at the multiple places separately. So similar type of some other problems can also occur if data is replicated or not stored properly. So हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस क्या करता है, देखिए यहाँ पर it solves the problems of inconsistency, then incorrect data, data redundancy and अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा. ये सारे प्रॉब्लम्स जो है आपका डेटाबेस सॉल्व करेगा. सो हाउ डेटाबेस इज गोइंग टू वर्क, देखिए अभी डेटाबेस कैसे वर्क करता है. सो देखिए यहाँ पर ये आपका रहेगा टोटल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आई विल राइट इट हियर एज दी DBM. ये रहेगा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, ये वो टोटल जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एंड दिस पार्ट इज योर डेटाबेस, राइट. देखिए अभी ये डेटाबेस के अंदर कुछ यूजर्स है. सो दीज आर नथिंग बट यू कैन सी एंड कॉल देम एज द एंड यूजर्स. ये सारे जो हैं इनको कहलाएंगे हम लोग एंड यूजर्स. Just don't concentrate on my hand, no problem. And these are nothing but what, the application programs. ये सारे जो कहलाएंगे इनको हम लोग कहेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. ओके, सो अभी यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम
do not maintain the separate copies of the same data. Rather, all the data are kept at the one place, and all the application that require data refer to the centrally maintained database, that is collection of data. देखिए यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये centrally maintained database है, that is nothing but the collection of data. So now if any changes is to be made to this data, अगर इस डेटा में आपको कोई चेंजेस, ये जो आपको दिख रहे हैं these rectangles are there, this is nothing but the data, centrally controlled data. So now if there are suppose any changes which are made to this data, then it will be made at just one place, and same changed information will be available to all the applications referring to it. अभी यहाँ पर एक में भी यहाँ पर गया अगर चेंज किया तो ये चेंज डेटा ये दोनों यूजर्स अगर सपोज यूज कर रहे हैं तो उनको अवेलेबल रहेगा. सो अगर सपोज यहाँ पर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यहाँ पर अगर कुछ चेंज किया ये डेटा में, तो सेम डेटा जो है वो इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी मिलेगा एंड द सेकेंड एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी मिलेगा. Now we do not mean to suggest that all redundancy should necessarily be eliminated, but sometimes there are sound business or technical reasons for maintaining multiple copies of same data. So देखिए कई बार ऐसे होता है कि सेम डेटा हमको बहुत बार लगता है, multiple copies of same data. So it is also called as the distributed data. So in a database system, the recovery can be controlled up to the desired extent and the system is aware of this redundancy if any. So यहाँ पर end users जो है ये आपका database access करेंगे. This database management system is going to give the access to this database, and end users are going to access this, and by using the application programs end users can use this database. So in this database, in this way the database is going to work here. So now we are going to see what are the advantages of databases. Databases के advantages देखिए क्या होते हैं. So we will see the advantages of databases one by one. So the first advantage of database is the databases reduces the data redundancy to large extent. So just I will that is advantages of databases. So first one is database reduces the data redundancy to a large extent. So यहाँ पर data redundancy क्या होती है, देखिए data redundancy means duplication of data. Duplication of data को हम लोग क्या कहते हैं, data redundancy कहते हैं. So देखिए non database systems maintain the separate copy of data for each application. अगर आपको कोई आपके पास कोई database नहीं है, that is non database will create the separate copy for each database application. So for example in college student records are maintained and the hostel records are maintained separately, जैसे कि हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखा था. सो यहाँ पर अगर कॉलेज ने रिकॉर्ड चेंज किया, हॉस्टल नहीं किया, तो डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम आता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आता है. और दूसरी बात ये रही कि सेम डेटा की कॉपी कॉलेज के पास भी रहेगी स्टूडेंट की, और सेम डेटा की कॉपी हॉस्टल के पास भी रहेगी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की. सो अभी यहाँ पर देखिए दिस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वर्क्स वेल. जैसे कि कॉलेज के पास सेपरेट डेटा है स्टूडेंट का और हॉस्टल के पास स्टूडेंट का डेटा सेपरेटली है, बट डुप्लीकेशन ऑफ डेटा may lead to inconsistency और incorrect data at times. जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस चेंज हो जाए तो क्या होता है. So this duplication of data means nothing but the data redundancy. So in this situation, the DBMS stores all data at one place, and all the application programs that require this data can refer to the same central place.
So this centralization है, this makes sure that the data remain consistent and secure. So ये centralization process जो है वो एक बात गारंटी देते हैं कि data remains consistent and secure. This is one of the advantage of the database. Then second one is databases can control data inconsistency to a large extent. So देखिए डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है पहले वो देखते हैं. दैट इज मल्टीपल मिसमैचिंग copies of same data is known as data inconsistency. So देखिए this is really what we can say a corollary of the point which we had discussed earlier. So when redundancy is not controlled, there may be occasions on which the two entries about the same data do not agree. That is when one of them stores the updated information and other does not. So at such times database is said to be inconsistent. So obviously an inconsistent database will provide incorrect or conflicting information. So by controlling the redundancy, the inconsistency is also controlled. So even if there is some redundancy written in the database due to some technical reasons, so here the database management systems ensures that any changes which are made to the either of the two entries is automatically made to the other. So this process is nothing but propagating the updates. So in this way the data inconsistency is going to be solved. Then its third advantage is database facilitates the sharing of data. देखिए sharing of data means what? The individual piece of data in the database may be shared among several different users. So in the sense that each of those users may have access to the same piece of data and each of them may use it for the different purposes. So the database management system makes sure that not only the existing applications can share the data in the database, but also that new applications can be developed to operate against the same stored data. So, or it can be said that the data requirements of new applications which may be satisfied without having to create any new stored data or stored file. So in this way, the database facilitates the sharing of the data. Then its next advantage is database enforce standards. So यहाँ पर देखिए the database management system it can ensure that all the data that is stored centrally follow the applicable standards. वो कुछ standards applicable standards follow करते हैं या नहीं इसके बात का ध्यान करते हैं database management systems. So there may be certain standards that laid by the company or organization using the database, or there may be certain industry standards that must be satisfied by the data. So similarly, there may be national or some international standards. So standardizing the stored formats is particularly desirable as an aid to data interchange or migration between the systems. So in this way, the databases are going to enforce the standards. Then fifth one is databases can ensure data security. So the information which is stored inside a database
is sometimes of a great value to a corporation. Obviously, therefore it must be kept safe, secure and private. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस होता है, सो उसको प्रॉपरली सिक्योर करके रखना पड़ता है, बिकॉज it may be some legal documents and all the things related to the organization. So a database management system ensures the data security and privacy by ensuring that the only means of access to the database is through the proper channel, and also by carrying out authorization checks whenever access to sensitive data is attempted. So in this way, databases can ensure the database security. So I hope you understood the different advantages of the databases. So in our coming lectures, we are going to cover the another parts related to the another points of the introduction to the databases. So the book which I have reported for today's lecture is Information Technology by Sumita Arora. So let's get started with today's quiz session. सो फ्रेंड्स चलिए आज का क्विज हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो टुडेज आईटी क्विज, आज के क्विज में टोटल 20 क्वेश्चंस विल बी देयर and each question will be having 1 minute. So let's get started. So here is question number 1 on your screen. A company should have at least dash exit routes for proper evacuation during an emergency. Your options are A1, B2, C4 and D, none of the above. So your time starts now. Time up. So correct answer is B2. देखिए कंपनी के पास एटलीस्ट 2 एग्जिट रूट्स होने चाहिए फॉर प्रॉपर इवैक्यूएशन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. So here is the question number 2 on your screen. If you need to call 100, that is 100 or 112 in an emergency, what should you tell the dispatcher? First one, A, describe the emergency. B, give exact address of emergency. C, give your name and telephone number of the phone you are using. And D, all of the above. So your time starts now. So the correct answer is B, give exact address of emergency. देखिए if you are going to describe the emergency, you are going to give your number and telephone number, it will be the wastage of time, and in emergency each and every minute and second is important. So correct answer is आपको क्या करना है, give the exact address of the emergency. Then question number 3 is on your screen. The employer or the company
is responsible for administering and managing workplace safety steps. True or false? Your time starts now. टाइम अप. यस, एक कंपनी की यानी कि एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क प्लेस सेफ्टी स्टेप्स जो है प्रॉपरली मैनेज करे. सो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू. Then question number 4 is here on your screen. Which of the following should be included at your home for first aid kit? Options are A. Hydrogen peroxide, B. Aspirin, C. Calamine lotion, and lastly all of the above. So your time starts now. टाइम अप. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. जी हाँ, आपके फर्स्ट एड किट में जो घर पर आप लोग फर्स्ट एड किट यूज करते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एस्पिरिन और कैलेमाइन लोशन, ये तीन चीजें होनी चाहिए. Then we will move towards the next question, that is question number 5. Bhopal gas tragedy was happened due to lack of safety measures. True or false? Your correct answer waiting and time started. Yes, it is correct that Bhopal gas tragedy was happened due to lack of safety measures. बहुत ही बड़ा हादसा था ये. वहाँ पर near about 15,000 to 20,000 animals and human beings were suffered from this, and the death rate was also very high. So it was happened due to the lack of safety measures. Then question number 6, that is, it is okay to keep one password for all your accounts. So answers are A, true, B, false. Your time starts now.
The correct answer is B, false. That it is not okay to keep one password for all your accounts. That is, if one account is getting hacked, then your all password will be there to hackers. And question number 7, that is, we should prefer private browsing mode. True or false? Your time starts now. So it is true that we should prefer private browsing modes to have the safety features. Then the question number 8, antiviruses help you to get rid of viruses. True or false? Yes, obviously it is true that antiviruses helps you to get rid of viruses. Then the question number 9 is on your screen. The act of buying an item online is called as A. E-shopping, B. E-ticketing, C. Both A and D. None of the above. So your time starts now. The act of buying an item online is called as A. E-shopping. Then we will move towards the next question. A person who writes a blog is called as A. Blog, B. Blogger, C. Blogging, and D. Blogosphere. So your time starts now.
A person who writes a blog is called as the blogger. The blogger is the correct answer. And question number 11 is here on screen. Out of the following, which is or are the components of an email? A username, B domain, C at the rate, and D all of the above. So your time starts now. सो करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. जी हाँ, ये सारे कंपोनेंट के सिवाय, जब तीन कंपोनेंट्स के सिवाय ईमेल आईडी कंप्लीट होता ही नहीं है. दैट इज यूजर नेम इज कंपल्सरी, डोमेन नेम इज कंपल्सरी एंड एट द रेट इज कंपल्सरी. दैट इज फॉर्मेट इज यूजर नेम एट द रेट domain name. So all of these components are necessary for email. Then question number 12 is here on this scale. What are the types of wireless connection? A Wi-Fi, B WiMAX, C both A and B, and D none of the above. So your time starts now. So both Wi-Fi and WiMAX are the types of wireless connection. So correct option is C, both A and B. Then the question number 13 is here on screen. Wi-Fi hotspots are totally secure to use. True or false? Time starts now. Obviously, the correct answer is B. False. Wi-Fi hotspots are not secure to use. The next question is, that is, wireless router doesn't require ISP. True or false? Your time starts now.
It is obviously false that wireless routers doesn't require ISP. It requires actually ISP. The next question is, what is DSL? A is digital system line, B digital subscriber line, C differential system line link, and D none of the above. So your time starts now. So DSL stands for B डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज की जाती है. देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज ISP? ऑप्शंस आर A इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर, B इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, C इंस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडर, एंड D none of the above. So your time starts now. So the correct answer is ISP is B इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि इंटरनेट सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है. सो क्वेश्चन नंबर 70 is here on your screen. For entering personal and financial information for online transactions, a URL must begin with A FTP, B HTTP, C HTTPS, and D any of these. Your time starts now. So the correct answer for entering personal and financial information for online transaction, a URL must begin with C HTTPS, that is Secure Hypertext Transfer Protocol. So the question number 18 is on your screen. What is IM? A. Instant mailing, B. Immediate messaging, C. Instant messaging, and D. None of the above. So your time starts now.
सो देखिए, व्हाट इज आई मीन्स इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन चैटिंग वगैरह करते हो, सो उसको इंस्टेंट मैसेजिंग कहा जाता है। लेकिन जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, देन गूगल हैंगआउट्स आर देयर, these are the examples of instant messaging, that is live and real time chatting is nothing but that instant message. So the next question number 19 is here on your screen. Use of caps lock in chatting should be avoided as it is considered equivalent to A. Singing, B. Shouting, C. Threatening, and D. Complaining. So your time starts now. So use of caps lock in chatting should be avoided as it is considered equivalent to shouting. ठीक है, जैसे कि कैप्स लॉक आप लोग चैटिंग में यूज करते हो, सो उसको शाउटिंग की तरह, चिल्लाने की तरह कंसिडर किया जाएगा. So that's why it should be avoided as it is considered to and equivalent to the shouting. उसको थोड़ा सा arrogant भी कहा जाएगा. Then the next question, that is question number 20, is on your screen. The act of buying or reserving tickets online is called as dash. Your options are A. E-shopping, B. E-ticketing, C. Both A and B, and lastly D. None of the above. So your time starts now. So, the act of buying or reserving tickets online is called as per the name, e-ticketing. So, e-shopping में हम लोग देखा, you can buy items online, that is purchase goods online, and you can reserve the tickets online using the e-tickets. So friends, I hope you enjoyed today's session. So that's all for today's session. We will meet in the next session with new topic. Till then, bye. So the next feature for the plus and iconic subscribers. Yes, we are having the exclusive feature for plus and iconic subscriber, that is raise a hand. So you can now speak to your favorite educator in live class. Yes, obviously you can ask your doubts also. So now you can clear your doubts instantly with an option to have one-to-one discussion with your favorite educator in a live class. So you can participate in quizzes, vivas, and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, obviously. And you can have the personalized and highly interactive live class experiences. So you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off. So Unacademy, let's start. So friends,
Unacademy's freedom to learn offer. So this Independence Day, get the freedom to learn. Yes, this is new offer only for CBSE class 9th. So student, this is the exclusive offer for CBSE class 9. That is, we are pleased to inform you that is our new exclusive offer for our CBSE class 9 learners. That is, if you take up a CBSE class 9 subscription for 2 years, then you will get the subscription of IIT, JEE, NEET Foundation and NTSC absolutely free. So what is this IIT, JEE, NEET Foundation and NTSC category all about? I will tell you about that. You can build the foundation for the IIT, JEE right from class 9th. So it is having the structured courses that will help you to crack the multiple Olympiads like NTSC, IMO and so on. Yes, obviously, and you can win the great national level scholarships. So you can save students 40% on your subscription price. So this is only for the first 500 CBSE learners and the offer can be availed using the educator referral code. So you can use my educator referral code, that is TD Live. So just this is the limited time offer and it is valid from the 11th of August 2021 to the 31st of August 2021. So students gets your subscription now. This is at limited period offer. देखिए दोस्तों, अनअकैडमी हर बार कुछ नया लाने की कोशिश करती है. सो इस बार जी हाँ, आप लोगों को जैसे कि पता होगा, you are having the last chance to win free Creative Corner subscription. So this offer is going to end on 23rd of the August 2020. म्हणजे हाँ, हमारी क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन की जो चांस है इट इज गोइंग टू एंड. सो देखिए ऑफर्स कैसे हैं. देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन, लाइक अगर आपका सब्सक्रिप्शन 12, 15 यानी 8 मंथ्स का है क्रिएटिव कॉर्नर का, then you will get that is a free Creative Corner subscription for 2 months. So whether it is plus or iconic based on your subscription. Then अगर आपका सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन है 24, 36 and 48 months का, so you will get the free Creative Corner subscription for 4 months. जी हाँ, 4 महीनों के लिए आपको फ्री क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलेगा. सो ये अगर आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्लस का मिलेगा. अगर आपका आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है तो आपका क्रिएटिव कॉर्नर का आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज दी, अगर आपका सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन है फॉर 60, 72 एंड 84 मंथ्स का, इधर फॉर द प्लस और इधर फॉर द आइकॉनिक. सो आपको क्या रहेगा, फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन मिलेगा पूरे 6 महीने के लिए. दैट इज टोटली फ्री. प्लस का है तो प्लस का मिलेगा एंड आइकॉनिक का है तो आपको आइकॉनिक का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है टोटली फ्री मिलेगा. सो हरी अप, इट इज लिमिटेड पीरियड टाइम ऑफर एंड यू कैन यूज माय कोड that is given here, that is TD Live, to get the free subscription also for the Creative Corner. So this is your last chance to win free Creative Corner subscription and the offer is going to end on 23rd of the August 2021. So choice is yours. So with Unacademy subscription, you will get with one subscription comes the great benefits like you will get the unlimited access to 7 subjects. 7 सब्जेक्ट्स को आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा एंड यू विल गेट द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स टू चूज फ्रॉम. ऑब्वियसली आपको पूरा सिलेबस मिलेगा. यू विल गेट द फुल सिलेबस फॉर NCERT and as well as dedicated plus courses. And yes, obviously without Unacademy subscription you will be having a lot of confusion. So jaldi kijiye students, choice is after all yours. So subscribe now before it is too late. So the next exams are I think just 2 months, right? So you can get the 10% discount on using the educator referral code. So please use my educator referral code, that is TD Live, so to get the 10% discount. So jaldi kijiye, hurry up, the time is getting over. So friends, we are having the mega launch every Mondays, as you know. So here we are having the Laksh Foundation batch for IIT and JEE aspirants. So ये बैच किसी लिए है, देखिए फॉर CBSE क्लास 9 के लिए भी है एंड CBSE क्लास 10 के लिए. एंड यस, पहले हम लोग देखते हैं
CBSE क्लास 9 के लिए इट इज गोइंग टू स्टार्ट on the 31st of the August 2021. 31st August को ये बैच स्टार्ट होगी and we are having the subjects like maths and science with the expert teachers. Yes, obviously you are having the new batches for doubt clearing and NCERT exercises also. And also अगर आप लोग IIT JEE के aspirants हो for CBSE class 10th, so यहाँ पर भी आपकी जो लक्ष्य फाउंडेशन बैच है वो 31st अगस्त 2021 को स्टार्ट हो रही है. सो वी आर हैविंग द स्पेशल स्ट्रेचेस फॉर द मैथ्स एज वेल एज द साइंस. तो देखिए मैथ्स की जो डेट है वो 1 सितंबर को स्टार्ट होती है एंड साइंस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 31st ऑफ अगस्त 2021. सो वैसे ही सीबीएसई क्लास 10 के लिए आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए एक और सीबीएसई क्लास 10 की बैच रहेगी, दैट इज लक्स फाउंडेशन बैच. It is for maths it is going to start on 17th of September 2021 and for science it is going to start on 31st of August 2021. So yes, obviously you are having the new batches for doubt clearing sessions and NCERT exercises. So students जो अभी से class 9th and 10th के IIT and JEE के लिए interested हैं, they are having the golden chance for it. And yes, you can use my code that is TD Live for flat 10% of discount. So देख किस बात की है students, join our new Laksh Foundation batches. So friends, let me tell you about the basic about the plus subscription and also the advanced plan of the basic, that is iconic जो है ये plus का जो है advanced version रहेगा. देखिए plus में जो you are going to have the basic plan to get started. And yes, obviously at Iconic, you can take your CBSE preparation to the next level with personal mentor. देखिए प्लस के फीचर्स क्या क्या है. यू आर हैविंग द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स एज वेल एज द इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, देन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड PDFs also. एंड इन आइकॉनिक में क्या रहेगा, प्लस के जो फीचर्स है वो सारे के सारे रहेंगे और उसके साथ आइकॉनिक में आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे. देखिए यहाँ पर भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स रहेंगे, देन इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, देन यू आर हैविंग द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड PDFs also. सो यहाँ पर एडिशनल क्या है आइकॉनिक में, देखिए द पर्सनल मेंटर इज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स, यू आर हैविंग द लाइव डाउट सॉल्यूशंस, लाइव इंटरेक्शन विथ योर मेंटर्स ऑल्सो, एंड यस ऑब्वियसली पेरेंट कनेक्ट भी यहाँ पर रहेगा, दैट इज टीचर पेरेंट कनेक्शन रहेगा यहाँ पर. एंड आपको आइकॉनिक का स्पेशल स्टडी प्लानर जो है वो भी मिलेगा. सो यू कैन यूज माई कोड दैट इज TDLive फॉर फ्लैट 10% of discount for both, that is on the plus and iconic solutions. You can select the plus or iconic based on your choices. So उसके plans कैसे हैं देखिए. अगर आप लोग CBSE का क्लास 9, 10th, 11, 12 का लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. अगर क्लास 10 का लोगे तो 10th, 11, 12 आपको साथ में मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का. तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग प्लस का देख लेते हैं. इफ़ यू आर हैविंग द 3 month सब्सक्रिप्शन देन यू हैव टू पे 7,500 for the 3 months, that is 2,500 for per month. Now if you are having the 6 month subscription then you are have to pay 10,000 for the 6 months, that is flat 33% off. Then if you are having the 12 month subscription then you are going to pay 15,000, that is 1,250 per month. If you are going for the 15 month subscription then you will have to pay 18,000. If you are going for the 18 months then you will have to pay 20,000, that is 1,111 per month. Now if you are going for the 24 month subscription then you will have to pay 25,000 for the 24 months, that is 1,042 per month. If you are going for 36 months then you will have to pay 32,000 for whole 36 months and 889 per month. If you are going for the 48 month subscription उसमें आपको क्या लगेगा 40,000, 40,000 जो है पूरा का पूरा पैकेज रहेगा एंड 830 will be for per month. देखिए आज जितना आप लोग ज़्यादा पैकेज लोगे उतना ही आपका बेनिफिट और डिस्काउंट जो है वो बढ़ता जाएगा. सो वैसे क्लास का 9, 10th, 11, 12 का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखिए the same case for 3 months, 6 months, 12, 15, 18, 24, 36 and 40 months. देखिए यहाँ पर 3 months का सब्सक्रिप्शन जो है वो
12,000 को रहेगा with 4,000 per month. Then next one is 6 months 17,000 रहेगा with 2,833 per month. Then 12 months का रहेगा 28,000. Then 15 months का रहेगा 32,000. 18 months का रहेगा 35,000. 24 months का रहेगा 48,000. 36 months का रहेगा 66,000 and 48 months का रहेगा 83,000. That is 1,729 per month. So वैसे अभी आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 10th 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए देख लीजिए. 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेगा 7,500 रुपीज़ के लिए. 6 मंथ का रहेगा 10,000 के लिए. 12 मंथ्स का रहेगा 15,000 के लिए. 15 मंथ्स का जो है आपके लिए रहेगा 18,000 के लिए. देन 18 मंथ्स का आपके लिए रहेगा 20,000 के लिए. एंड 24 मंथ्स का रहेगा 25,000 के लिए. एंड लास्टली 36 मंथ का जो है वो 32,000 के लिए रहेगा. And the same case for the Iconic, that is for class 10th 11th and 12th subscription. That is 3 months का रहेगा आपके लिए 12,000. Then 6 months का 17,000. 12 months का 28,000. 15 months का 32,000. That is 2,133 per month. 18 months का रहेगा 35,000 के लिए. एंड 24 months का रहेगा 48,000 के लिए. ऑब्वियसली वैसे ही क्या रहेगा, 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है लास्टली वो रहेगा 66,000 के. दैट इज 1,833 per month with 54% discount. And yes, obviously you can use my code, that is TDLive, for flat 10% off discount. So student, जल्द से जल्द आपका जो सब्सक्रिप्शन दैट इज बेस्ड ऑन योर दैट इज प्लस और आइकॉनिक, प्लीज सब्सक्राइब करके लीजिए. सो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट ला रही है. जी हाँ, वी आर इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप ट्रस्ट वंस अगेन, अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट. सो इस बार you can win the scholarship worth rupees 2 crore. So link is given in the description box. So obviously this Unacademy Mega Compact is on every Sunday and you can use my code, that is TDLive for the educator referral codes. So देखिए, Unacademy Mega Compact बहुत से आप स्टूडेंट्स ने दिए होंगे, कुछ ने नहीं दिए होंगे. So let me tell you about that. So Unacademy Mega Combat Scholarship Tips, that it is formula for your success in CBSE classes 9 and 10. You can win one scholarship worth rupees 2 crore. देखिए लास्ट टाइम हम लोग जो लिए थे बैचेस उसके 1 करोड़ के थे. So now we are having the 2 crore scholarship offers. So आपकी पढ़ाई के साथ साथ you can win the prizes also. And these Mega Combat Scholarship Tips are for CBSE classes 9th and class 10. So date लिख लीजिए. The upcoming Mega Compact is on August 29th, 2021 at 11 AM. So enroll online. लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं हम लोग पहले से ही. So उसका फॉर्मेट देखिए कैसा रहेगा. You will be having 30 questions and 45 minutes for that. These questions and you are having the 45 minutes to solve this. The test will be obviously available in Hindi as well as English language. Both languages में आपको टेस्ट अवेलेबल रहेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. And test will be live. It will be the free live test on your Android application. So जल्दी कीजिए and enroll now for Unacademy Mega Compact. Date लिख लीजिए August 29 at 11 AM. So you can have the flat 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. You can use my code, that is TDLive, for both Plus and Iconic subscription with flat 10%. And you can download the Unacademy app now. Get it on the Google Play Store and you can download it on the Apple Play Store also. Try its all of the features for free using my code, that is TDLive. So students, that's all for today. We'll meet in the next session. Unacademy, let's crack it.